ओके, तो हम लेक्चर 3 का होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट वाज द होमवर्क? वी हैड टू मेक द alkanes होमोलोगस सीरीज. वी विल डिस्कस होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, बट अभी के लिए आपको बस पता होना चाहिए हम alkanes बना रहे हैं, सारे के सारे alkenes बना रहे हैं एंड alkynes बना रहे हैं, दोनों लुईस और बॉन्ड. दोनों. And I'll just draw it along with, after this we'll just take a regular class just to show you how easy it is and how time consuming it could have been. Anyways, so first of all, alkane banane, we also have to understand the concept here to understand the general formula. Now, how do we make them? We start with the first alkane, which is the simplest alkane. We start with a single carbon atom. Now, if we have a single carbon atom, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से? 4. तो चारों साइड हम क्या एलोकेट कर देंगे? हाइड्रोजन एलोकेट कर देंगे. एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द बॉन्ड स्ट्रक्चर. You should always draw the bond structure first, even if they ask for both. And even if they ask for the Lewis symbol, you should first draw the bond structure. It just simplifies. It just is a lot more simpler. You just can imagine very easily. Now, iske baad we have the Lewis symbols. So carbon के पास 4, and then hydrogen के लिए हर जगह क्रॉस एच लगा देते हैं. क्रॉस एच, क्रॉस एच क्या दोनों को? No, I mean, if there are only two elements, you represent one of them with a cross and the other one with a dot. If there are more than two elements, then you just can only use dots and crosses. So let's say carbon, hydrogen and oxygen है, तो किसी भी दो के लिए dots use कर लो. Yes, it's just the lowest symbol. Just think about it like dots or cross ही उसके पास. You don't, no, you don't. You could think of it as like मतलब rule कि हम यही दो बना सकते हैं. तो just make the duets first. Always make the duets first, and then we have the octet. The octet is this one. Obviously, this is the complete Lewis structure, and this is the only way to draw it. Minus the colors, you don't need that. Next, this is known as methane. And this has the chemical formula. This is what it is called, chemical formula. This is the chemical formula. This is not a chemical symbol यार. से chemical symbol था बहुत. Chemical symbols पता है क्या है इसमें? Carbon and hydrogen, उसे बोलते हैं symbols. That is not a, मतलब this is not a chemical symbol. This is a chemical formula, CH4. ठीक है? This is a chemical formula. Next we have, अगर हम दो कार्बन ले लें, and remember this is me purely utilizing the rest of the bonds कि दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, तो इस कार्बन के पास भी 3 बचे, इस कार्बन के पास भी 3 बचे, और हर जगह हम क्या फिल कर देंगे? हाइड्रोजन. सो वी हैव H, 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 H and H, and now we move on to its Lewis symbol. So we have C, C, and जहां जहां आपने स्ट्रेट लाइंस बनाई है ना, वहां पे 2 डॉट्स बना दो. हर स्ट्रेट लाइन के लिए 2 डॉट्स, हर स्ट्रेट लाइन के लिए 2 डॉट्स. आई मीन इसमें टेक्निकली डॉट्स एंड क्रॉस होंगे. सो जितने भी स्ट्रेट लाइंस है, डॉट क्रॉस, कार्बन हाइड्रोजन डॉट क्रॉस, कार्बन हाइड्रोजन डॉट क्रॉस, कार्बन कार्बन डॉट डॉट, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, and then all the rest of the places are obviously H, 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 H. And now we first obtain all the duets. Oh, sorry. So this is duet, this is duet, this is duet, 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 duet. It's time for octates. Let's fill the octates. Octate and octate. Now some of you might not get circles when you draw this. I have a pretty good idea कि कहाँ पे आने वाला है, इसलिए मैं पहले सर्कल बनाता हूँ. So I always recommend कि पहले circles बना लो, बाद में dots fill कर दो. I'll do that in the next time. Next we are going to make, and this is the best I will do. मतलब तुम्हें इसके बाद next जो भी बनवाने हो मेरे से बताना.
मैं सारे नहीं बनाने वाला, इट्स क्या फर्स्ट 5, फर्स्ट 6, फर्स्ट 6। डेकेन, डेकेन, डेकाइड। सर डेकेन और डेकाइड। अच्छा नहीं, अब ये फर्स्ट 6 बनाने हैं। It's first 6. See, understand when I say, once you understand the concept, making H 100, I mean, it's just stupid. You understand the point. What? क्या? नहीं, अभी साइक्लो पे तो जा ही नहीं रहे हैं, साइक्लो तो आज की क्लास है। अभी तो हम सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट चेन पढ़ रहे हैं। चलो एनीवेज, नेक्स्ट दिस वाज इथेन, एंड इसका फॉर्मूला क्या था? C2H6। नाउ नोटिस एनीथिंग कि यहाँ पे कार्बन कितने बड़े हैं? एक। कार्बन एक ही बड़ा है, हाइड्रोजन कितने बड़े हैं? दो। एंड एल्केन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला CnH2n+2. This is the general formula for any alkane, and they differ by CH2 group. We will discuss all of that in homologous, but that is what alkenes are. Now alkene में मुझे कोई बताओ बनाने। पहला इसमें तुम्हें पता है सिंपलेस्ट कौन सा होगा? दिस विल बी, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट 6 में से एक थप्पड़ मार दूंगा और बोला पेंटीन बना देता हूँ। पेंटीन बना चुका हूँ मैं, कोई और बताओ। क्लास क्लास नहीं बनाया था। ब्यूटीन बना, ब्यूटीन बना, ब्यूटीन भी बना चुका हूँ यार। कोई, हाँ मतलब मैं कोई नहीं, मैं ब्यूटीन ही बनाता हूँ। नहीं, एनीवेज तो एक मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड 6 वाला बनाता हूँ जो लास्ट मैंने आपको बनाने दिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and rest of the places we leave for hydrogen। 6 तक बना लो। द थिंग इज कि हम नॉमेनक्लेचर में 6 तक सीखा है हमने, तो मैं आपको 6 तक बोल रहा हूँ। टेक्निकली मैं नॉमेनक्लेचर जब दोबारा कराऊंगा तो मैं 10 तक भी बता दूंगा, बट 6 इज द मतलब बेस्ट यू कैन, मतलब आई डोंट थिंक यू नीड टू ड्रॉ ऑल ऑफ दैट। क्या अभी क्या कर रहा हूँ? एच एच एच, हाँ एक पहला डबल बॉन्ड हो तो, ओ माय गॉड, सीक्रेट रिवील्ड। पहला वाला डबल बॉन्ड बना देते हैं, वो सारी चले गए। I never get this point of this stupid software. Why would I want to delete all of them together? Anyways, इसके नीचे भी नहीं आएगा। Okay, so this is C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या मतलब? थिंग इज कि इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैंने पहला बना दिया। सिंपल है दैट। कहीं भी बना सकते हो, बट वो उसके आइसोमर्स होते हैं। नहीं, वो फिर एल्कीन नहीं होता। क्या होता है? क्या? हाँ, क्या क्या होता है? I mean this is the normal one, so you don't have to call it that. You don't have to call it that. क्या? अगर मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर में दो बार डबल बॉन्ड बना, वो एल्कीन नहीं होता। होता क्या? एल्कीन नहीं होता। Understand? I do not want to start a discussion that would not cover, करो तो क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे। This is, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कभी बोला जाए ना ये 6 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? Hexene. And this is what hexene is. Even in IUPAC nomenclature, the scientific name अगर कभी hexene बोला जाता है तो यही होता है। It वही मैं बोल रहा हूँ कि 1 इसकी लोकेशन के ऑफ डबल बॉन्ड की बात करते हो। लोकेशंस हम डिस्कस करेंगे जब IUPAC nomenclature करते हैं, बस लोकेशंस की कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है। एंड इट इज नॉट काउंट, ये लास्ट लोकेशन नहीं है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ नेमिंग। वी विल स्टडी दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Now this is C6H12. Okay, and let's just make it Lewis. तो देखो अगेन याद रखना कॉन्सेप्ट कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसमें 2 डॉट्स फॉर इट, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें डॉट क्रॉस, and then just follow the bond structure and you'll never have a problem.
dot 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 cross dot cross dot 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 cross dot cross dot 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 cross dot cross dot cross, and then all the places we obviously have hydrogens here. Let's obtain all the duets. So make sure इस सब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो. 2 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 2. अब 8 बनाने हैं. सो नाउ मेक श्योर आप ओलंपिक रिंग बनाना जानते हो अच्छे से. लेट्स मेक सम ओलंपिक रिंग्स फॉर 8. ये आपने Very ऑक्टेन precise. बताया है? नहीं नहीं, क्या है? हेक्सीन है. चलो इसीलिए। बन गया. That's simple. And this has the general formula CnH2n. Remember, this is, अगर ये formula हुआ, this formula is not enough to say something is an alkene. You also need to know if it is a straight chain or branch chain even works. But it should never be a ring or cyclic. बताता हूँ. मतलब ब्रांचिंग भी हो सकती है इससे कि सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी. कितने हुए? 1 2 3 4 5 एंड 2 और चाहिए क्या? ये हो गया ना. हाँ, तो दिस एंड दिस. एच 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 H, H. We'll study later on how this is what is known as a structural isomer of. टाइम नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं, but I mean this is a structural isomer of hexene. I just made it in a weird way. You can make it as more simpler. आइसोमर होते हैं? क्या आइसोमर क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है. स्ट्रक्चर अलग होता है। तो they have the same structure chemical को formula. कैसे भी अलग करे तो वो एक नया आइसोमर हो जाएगा, मतलब allotrope। Not really. allotrope Not really. I mean, yeah, I get the concept कि मतलब उसके भी structures अलग है, but उसके structures की वजह से उनकी chemical properties भी change हो रही है. इनकी नहीं होती. तो इनका स्ट्रक्चर चेंज होने से एक नया आइसोमर आ जाता है, बस स्ट्रक्चरल अगर तुम चेंज कर पाओ, जैसे तुम मिथेन के कैसे स्ट्रक्चर चेंज करोगे? सबके आइसोमर नहीं होते. मिथेन में नहीं कर सकते, इथेन में नहीं कर सकते. जैसे मान लो वो एच लगा के उधर लगा दे, मतलब सेम। नो नो नो, मतलब इसमें जैसे isomerism is a phenomena which is possible only when there is a long carbon chain. छोटे carbon chain में possible नहीं होता. हाँ, 5 में. हाँ, and we'll actually calculate how many can be possible and we'll make all of them for something. Okay, now alkyne में कोई बता दो मुझे जो बनवाना चाहते हो तुम. प्रोपाइन बना देता हूँ. मिथाइन तो होता ही नहीं बेटा. C single bond C, single bond C. C triple bond से start करेंगे obviously because this is YNE. C triple bond C, single bond C. यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह है, बीच वाले के पास कोई भी जगह नहीं है, लास्ट वाले के पास 3 जगह है. So this is C C2H4 or C3, sorry, C3H4. C3H4 or propine. Now let's make this Lewis symbol. C dot dot dot. अच्छा, यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट है ना, तो अगेन वही करेंगे. सिंगल सी ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड ऐसे बना दिया.
देन दूसरा C, दूसरी साइड सिंगल बॉन्ड C, तीसरे के साथ तीनों में ऊपर क्रॉस हुए. दिस इज हाउ यू मेक इट. सो H H H H. Let's just make all the duets first. 1 duet, 2 duet, 3 duet, and 4 duet. Let's make our Olympic rings, which is let's switch to- yeah. So octet, we have octet, and we have octet. This is your alkyne, and this has the general formula CnH2n minus 2. CnH2n. 2n. So yeah, अच्छा वो प्लस 2 हो गया, ये माइनस ये -2 हो गया, बीच वाला CnH2 है. सर हम एच की वो फर्क नहीं पड़ता ना क्या? पोजीशन दोबारा बोलो. एच की पोजीशन फर्क नहीं पड़ता मीनिंग? एक्साइटमेंट बना दूं और ऐसे ऐसे कोई you can do this. Like मतलब इसको ऊपर भी बना सकते थे आप. I just like to make it a little symmetric. I just like to make it so that it just is equally distributed. But it's not wrong if you condense it technically. Try and do not, matlab, try and make it as simple as possible. Okay.